Good morning, students. I welcome in Balkrishna Vidyapit online education channel. Now, students, we are going to learn about textual exercise. The first question is: a solution turns red litmus blue. Its pH is likely to be just like one solution. It turned red litmus into blue. Guys, we know all about red litmus and blue litmus. Acid always turns blue litmus into red and base always turns red litmus into blue. We know it very well. So its pH likely to be, first you have to know that the pH graph always is 1 to 14. Okay, 0 to 14, but now we are considered 1 to 14. First 1 to 6 acids and 8 to 14 bases. Okay, 8 to 14 base always, but in 7 is always neutralized. The 7 pH is always neutralized pH. So and and base is always turns red litmus into blue. So now we have to consider 8 to 14 pH, the pH between 8 to 14 graph. Okay, so now we have four options. Option A is 1, option B is 4, option C is 5. But now we have to we are know that 1 to 6 are always acid. So one option A is acid, so it can. B is 4, it also acid. C is option C is 5, it is also acid. And now last option D, the pH is 10 and 10 is between 8 to 14. So now we have to consider option D. So the reason is mentioned here: if any solution turns red litmus paper blue, then it is basic in nature and its pH value would be more than 7. And always reminder that the value of pH is more than 7, it called base, and the value of less than 7 is always called acid. Okay, so the next questions. Second, the solution react with crushed egg cell. Students, we know that we always know crushed egg cell. The egg cell is made up of calcium carbonate, CaCO3, calcium carbonate, CaCO3. Okay, it called egg cell. Also, the marble and the limestone is also known calcium carbonate. Okay, the crushed egg cell, the solution react with crushed egg cell to give a gas. When we react a solution is A, just example A, we get it A. We don't know the name, exact name of A, but now we consider as A. Okay, the solution is react. The XL is made up of CaCO3, calcium carbonate. Okay, and the solution always acid react with calcium carbonate, the carbon dioxide gas is generated. So carbon dioxide gas always turn lime water milky. So there are four options: sodium chloride, because sodium chloride is salt, hydrochloric acid is acid, and lithium chloride and potassium chloride are base, basic salt, not acidic salt, but we consider here HCl, hydrochloric acid. And the reason is given below. The crushed egg cells possess a layer of calcium carbonate which react with dilute HCl and excrete CO2. Always acid react with calcium carbonate, it will be generate carbon dioxide gas. Here excreted carbon dioxide gas turn lime water milky. Okay, now next question.
Third, 10 ml of solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of given solution of hydrochloric acid. HCl means hydrochloric acid. Okay. So if we take 20 ml of same solution, but now we have to understand here, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का 10 ml का सॉल्यूशन है, वो हमने तटस्थ कर दिया, मतलब कि न्यूट्रलाइज कर दिया, किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन? 8 ml. 10 ml 10 ml के लिए हमको 8 ml चाहिए. ओके तो फिर 20 ml के लिए कितना चाहिए? 20 ml के लिए कितना चाहिए हमको? 20 ml, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड वी रिक्वायर? So 20 into 8, it means we have to do here cross multiplication. 20 into 8, it means 160 divided by 10, so 16. So now if we take 20 ml of same solution of NaOH, the amount of हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, द सेम सॉल्यूशन बिफोर जो था वही लेना है हमको. तो कितनी अमाउंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की चाहिए 20 ml के लिए? तो वी गॉट द आंसर हियर इज 16 ml. द रीजन इज गिवन बिलो. इफ वी टेक डबल अमाउंट ऑफ NaOH, so for its neutralization the amount of hydrochloric acid would have also required double. Therefore for neutralization of 20 ml NaOH, the 16 ml hydrochloric acid would be required here. Okay, the next question, which one of the following type of medicine is used for treating indigestion? हमको पता है अगर हमको घर पे किसी को एसिडिटी हुई होगी तो हम उसको लेमन वाटर नहीं पिलाएंगे. क्यों? क्योंकि लेमन वाटर इज ऑल्सो एसिडिक. ओके, तो किसी को इंडाइजेशन प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? हम घर पे जो इनो होगा वो हम इनो उसको देंगे. अदरवाइज द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, रिमाइंडर दैट MgOH ट्वाइस, MgOH twice. It is well known antacid medicine for treating indigestion. Remind that. Okay, एंटीबायोटिक, चलो इंडाइजेशन हुआ है तो एंटीबायोटिक की कुछ जरूरत ही नहीं रहेगी. एनाल्जेसिक्स, कोई पेन तो नहीं हुआ तो एनाल्जेसिक्स भी हम नहीं देंगे. लास्ट वाला है एंटीसेप्टिक. चलो एंटीसेप्टिक तो कोई है ही नहीं, क्योंकि स्किन का प्रॉब्लम होगा तो हम एंटीसेप्टिक ट्यूब्स वगैरह कुछ अलॉट करेंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं. लेकिन एसिडिटी की वजह से इंडाइजेशन होता है. एसिडिटी मतलब एंट एसिड, एंट प्लस एसिड, क्योंकि ये एसिड का प्रतिकार करते हैं, तो उसके लिए हम देंगे उसको एंटासिड. ओके, तो एंटासिड इज बेटर ऑप्शन फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, write word equation and then balanced equation for the reacting taking place when. चलो, तो हमको जो complete reactions और equations देनी है, but always remind that equation must balanced. First one, a dilute sulfuric acid react with zinc granule. What is granule? We know that the wheat, the bajri are granules. So zinc never exists in the form of powder or any pieces. It will we have to take zinc granule, not the powder form. Okay, the first A, dilute sulfuric acid. How we must have to know the chemical formula of sulfuric acid. Sulfuric acid means H2SO4. Diluted, इट मीन्स जो हमने डाइल्यूट किया है, उसका मंदन किया है, तो डाइल्यूट होगा तो उसमें पानी हमने मिलाया होगा. वी एड वाटर टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सो वी मस्ट हैव टू राइट
the H2SO4 chemical formula with the aqueous form. So aqueous means aqueous form, क्योंकि हमने इसमें पानी डाला है उसका डाइल्यूट करने के लिए. ओके, रिएक्ट विथ जिंक ग्रेन्यूल. तो जिंक ग्रेन्यूल है, लिक्विड तो नहीं है, नहीं गैस फॉर्म में है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, सॉलिड. इट रिएक्ट, इसमें थोड़ा मिस्टेक है, 2/3/11 है, ऐसा कुछ नहीं है, रिएक्टिंग एरो है इधर. ठीक है, रिएक्टिंग एरो. सो जिंक विल react with sulfate SO4, so it will, the product is zinc sulfate. H2SO4 plus zinc, it react with ZnSO4, zinc sulfate, and here not Hg, only H2, here the print mistake, H2 gas, H2 gas will be generate, H2 gas. Okay, hydrogen gas. Second B, dilute hydrochloric acid react with magnesium ribbon. Ribbon means strip, magnesium strip. Okay, dilute hydrochloric acid. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने डाइल्यूट किया है, तो उसके पीछे भी हम एक्वियस लिखेंगे क्योंकि उसमें पानी डाला होगा हमने, HCl, लेकिन डाइल्यूट इसमें लिखा है, जरूरी है लिखना. एक्वियस प्लस मैग्नीशियम की रिबन है, मैग्नीशियम रिबन है यानी कि स्ट्रिप, पट्टी है, तो मैग्नीशियम सॉलिड लिखेंगे. तो HCl react with magnesium, it gives to magnesium chloride because Mg react with chlorine, Mg here react with chlorine. Okay, Mg react with chlorine, so product form MgCl2, and only hydrogen is remain here, so H2 gas will be generated. Okay, now C. What is the C? Dilute sulfuric acid react with aluminium powder. Okay, dilute sulfuric acid react with aluminium powder. Okay, तो dilute sulfuric acid H2SO4 we, but student, we should have to balance the equation, otherwise the exact product we couldn't find here. Okay, एल्यूमिनियम पाउडर, तो एल्यूमिनियम पाउडर है तो फिर सॉलिड तो लिखना पड़ेगा हमको. ओके, सो now H2SO4 react with aluminium, it gives to Al2SO4 thrice. so एल्यूमिनियम के साथ हमको सल्फेट ऐड करना पड़ेगा, तो ये फॉर्म होगा Al2SO4 thrice, and the hydrogen is remain here. okay, how many hydrogen is here? 3 to the 6. so यहाँ पे H2 लिखा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3H2 we have to write here 3H2, here the print mistake, 3H2 is here. Okay, now D, dilute sulfuric acid react with iron fillings, iron fillings होती हैं उसके साथ, तो dilute sulfuric acid here the also, sorry, dilute hydrochloric acid. Okay, तो dilute hydrochloric acid react with iron, so HCl, here HCl डाइल्यूट लिखा है तो हमको HCl के पीछे AQ लिखना पड़ेगा, aqueous फॉर्म है. ओके, रिएक्ट विथ आयन, नॉट आयन but iron, Fe solid, it react with Fe react with chlorine, so product form FeCl2, and then H2 is remain here, so hydrogen gas will be generate here. Okay, in the next lecture we will learn about the next question. Here we are completing this lecture.